Ranjit Walia speaking. Yeah, definitely I'll do. Thanks. भैया एक सूखा पूरी बनाओ. Okay, so let me get this straight. So basically you want Vipul sir to do a 1-hour show at your management fest. Yes, sir. But your college has no budget. No, sir. यार आप correspondence वाला MBA तो नहीं कर रहे हैं. Because I don't think you realize that a business deal is when a service or commodity is exchanged for a price. सर प्लीज सर आप उन्हें रिक्वेस्ट करिए ना. यहाँ बहुत लोग देखना चाहते हैं उन्हें. बहुत प्यार मिलेगा सर उन्हें यहाँ पे प्लीज. यार अगर उन्हें प्यार चाहिए तो अपने मॉम डैड के घर चले जाएंगे ना. नहीं उनसे ज्यादा प्यार तो उन्हें कोई नहीं दे सकते. तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास प्यार के साथ चेक भी हो देने को तो आप दोबारा फोन करें. ओके बाय. Wow, that was really. रूड आई नो. करना पड़ता है कॉलेज स्टूडेंट्स भी ना. Actually, I was going to say impressive. ओ हाँ मतलब ऑफ कोर्स मतलब वो तो था ही. Impressive because I was rude? You were not rude, you were dominating. Dominating. Dominating and kind of sexy. Are you flirting with me? Technically, I'm flirting with Ranjit. Well, technically that's adultery. Don't worry. मेरे हस्बैंड को कुछ पता नहीं चलेगा. कब है यार? I don't get it. मतलब ये कौन सा अट्रैक्शन हो रहा है? Exact same face, exact same body, बस voice over different है तो तुम इस तरह like. But if the voiceover is getting you late, then what's the problem, Ranjit? Oh, nice. वैसे ये लॉजिक तो आपने बिल्कुल सही यूज किया. अगर आपके हस्बैंड को पता नहीं चलता तो मुझे क्या. सॉरी कविन. सॉरी आई कांट डू दिस. इट्स टू ऑकवर्ड. क्यों? यार मैं रंजीत नहीं हूँ. आई मीन दिस इज रंजीत यार. मैं रियल लाइफ में कैसे दूसरा. आई एम रियली सॉरी काव्या. इट्स काव्या प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार. काव्या काव्या इट्स नॉट यू इट्स हिम. Hello, is that Mr. Ranjit Walia? Yes. Actually, I wanted to book a show. It's a private show with an exclusive audience of 1. Well, I hope the audience can handle that much talent alone. Of course, the audience is more than ready. And I want the entire performance to be below the belt. Well, don't worry. Vipul sir has a lot of experience with that. But you know what the problem is right now? I'm negotiating this 8-show bulk deal for him. So it's kind of unavailable for the next 2 months. So Too bad. I know. What about you, Ranjit? मैं? Come on, Vipul sir के सामने मैं कहाँ टिकूँगा? Like his whole performance, it just starts with a huge standing ovation. But I'm sure you can do happy endings. I don't know, Kavya. Little tired up. Please, Ranjit, I insist. Okay, fine. But I have a couple of conditions and they are strictly non-negotiable. Sure, go ahead. First, we both agree that it's a one-time thing. So no once more requests. Believe me, I get that a lot. Well, okay. And secondly, अब से विपुल से रोज सुबह सब्जी लेने नहीं जाएंगे. He's an artist. हेलो. हाँ आवाज नहीं आ रही. Take your time. It's a big life decision. I understand. So. Fine. Switch off the lights. Lights. But you know सबसे ज़्यादा exaggeration करते हैं न्यूज़ चैनल्स वाले, especially India TV. They do anything they feel like for TRPs. Like, do you guys remember the 2006 Mumbai train blast? Only 6 bomb blasts had happened. But India TV was already reporting that 10 bomb blasts had happened. I think for once even the terrorists would have gotten confused. You know? वे 4x blast किसने किया इधर यार? 4x blast किसने किया है? सब पता नहीं सर, शायद अब्दुल ने किए होंगे सर.
ये सर इसने अपने रेज्यूमे में भी लिखा है, आई लाइक गिविंग मोर देन माई 100%. वही है सर ये. सबसे ज्यादा एग्जैजरेशन होता है हिल स्टेशंस पे, स्पेशली द टूरिस्ट गाइड्स. आपने देखा टूरिस्ट गाइड्स हिल स्टेशन, दे जस्ट टेल यू एनीथिंग दे फील लाइक यू. Like you went to Lonavala, it takes us to Tiger Point. Like you're really excited to see some real tigers. Next day it takes us to this large field. He's like, sir, वो बड़ी वाली rock देख रहे हो sir? Sir, ध्यान से देखिए sir, it's in the shape of a tiger sir. Tiger Point. And you know, now I'm trying really hard now to visualize that tiger in that rock. And there will always be this one guy in your group who will put pressure on you only. अबे वो तेरे को दिख नहीं रहा टाइगर बन तो रहा यार. बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कर यार. I mean, you're under so much pressure. After a point, you're like, "Acha, whoa! दिख रहा टाइगर अभी." इधर मेरे को तो और दुर्गा माता भी दिख रही बैठी हुई यार. Thanks यार. आज तूने bigger picture दिखा दी. Thanks. Then I went to Taj Mahal. Do you guys know this fun fact about Taj Mahal? Shah Jahan, he cut the hands of all the workers so that they cannot build another Taj Mahal. And my point is, do you guys think like after Shah Jahan he cut the hands of the first worker, the rest of the workers, they just started, they got scared and they just started bluffing. They're like, अरे सर मैंने ताजमहल बनाया नहीं सर. सर मैं कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ सैलरी लेता था सर. अरे सर, I am from the HR department. Try to understand यार. हम लोग कुछ नहीं करते सर. हम बस दिवाली के टाइम ऑफिस में रंगोली बनाते हैं सर. That's it सर. हेलो, रंजीत वालिया स्पीकिंग. या शालिनी? ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड इट्स अ बल्क शो डील. ओके फाइन, एक बार क्लाइंट से डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे, बट ओनली बिकॉज विपुल सर लाइक्स यू. हाँ, मीट मी टुनाइट इन पर्सन. नो 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 शालिनी, आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होगा. यू नो, बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाउन ना. क्या करें, बिजनेस. या आई नो, टू बैड. या स्काइप कॉल तो आई डोंट नो शालिनी. ये नहीं, ऑफ कोर्स विपुल सर रियली वांट्स टू डू दिस शोज. या इट्स यार अंदर नींद कब आ गई पता ही नहीं चला. ये कमोड बिना जरूरत से ज्यादा ही कंफर्टेबल होते हैं. दिस इज व्हाई आई लाइक इंडियन. लेट मी जस्ट फिगर इट आउट शालिनी. I'll just call you back, okay? तेरा शो खत्म हो गया? Let's go to the bar counter, bro. चलो. चलते हैं, लेकिन उसके पहले तेरे से एक छोटा सा काम है. Let me be very clear. I'm against all of this. क्या होटल का वाईफाई यूज करने का? डोंट वरी, फ्री है. नहीं बे, ये फेक मैनेजर. फेक कहाँ है यार? देख, रंजीत का खुद का फोन नंबर है, खुद की आवाज है और खुद का चेहरा भी. I'm not talking about legalities here. क्या तू ये क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए वेबसाइट, फेक मैनेजर और अभी फेक स्काइप आईडी? ब्रो, you're an artist. Show yourself some respect. But as Ranjit would say, respect doesn't pay the rent of Vipul sir's house. देख बुशी, for the next half an hour, just stay calm and composed. और मैं जैसे जैसे बोलता हूँ बस वैसे वैसे बोलता जा. Okay, fine. Good. पर कब करना होगा ये? अभी. अभी? या. अभी तो तूने चार्ज पे लगा था फोन. हाँ, बट 5 मिनट में 2 घंटे का चार्ज होता है. जस्ट रिमेंबर, जैसा बोलूं वैसे बोलते जाना, ठीक है? Hi, can you see us? Can you see me? Can you see him? Me? Yes, I can see you. Yes. Hi, I'm Tarun Jain and this is my colleague Varun Pathak. Varun Pathak, Tarun Jain. Hi, this is Ranjit Kalia. Walia. Sorry, I'm bad with names. Your own name? I understand that you wanted to meet me urgently regarding the shows. Yes, we wanted to resolve all issues and lock this down by the weekend. Yes. Weekend is for fun. We have no work on weekend policy. That's why Shalini suggested we quickly touch base with you. Who's Shalini? Shalini, the event manager, Red Velvet Events. Oh, Shalini. No. Shalini. Oh, okay. Yeah, of course I know her. Yeah. So, Mr. Ranjit, we have a very important question. What will Vipul wear at the event?
His own clothes. No, what type of clothes? You see, our theme is smart casuals. We definitely want less of casual and more of smart. Like 30% casual and 70% smart. Well, in that case, Vipul sir will wear a jacket. Can you send us a picture of him wearing that so that we are sure? Yes, of course. Anything else you want? Yes, regarding the content. Oh, yes, the content. We want you to keep out sex, religion, and politics. And no jokes on women. Yes, no jokes on women. As a company, we have a strict no sexism policy. Because women can't handle jokes on themselves. They're very sensitive. Yes, they're very sensitive, no matter how trivial the issue is. You guys realize that this is perfectly fine for Vipul. Sir. In fact, he's known for his clean content, intelligent humor. So it's worth every rupee you spend on him. Yes, तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।